Good morning, guys. Myself Radhey Bairagi, and I'm again here for your civil engineering studies. Yesterday we have studied design of deep foundation, and from today we are going to study retaining walls. Okay, what are the retaining walls? Have you now the name is retaining? It means it retains some material. Is called retaining wall. Okay, तो मैं वन बाई वन पढ़ता हूँ. आई जस्ट रीड आउट. आपको समझना है. The retaining walls are used to retain earth fill or any other materials so that the ground surface at different elevations are maintained on either side of the retaining wall. These are mostly used for roads in hills area, swimming pool at the end of bridges in the form of abatements and underground water tanks, right? The various types of retaining walls are as follows. The first one is cantilever retaining wall. What is cantilever? You can see T-shaped cantilever and L-shaped cantilever. There are two types of cantilever retaining walls. One is T-shaped retaining wall, cantilever retaining wall, and other is L-shaped cantilever retaining wall. In T-shaped, it is toe and heel is there at the bottom and stem is present. And in the L-shaped cantilever one, there is only heel and stem is present. Okay, so these two walls you can easily see. Okay, the it is reinforced concrete wall utilizing the weight of the soil itself to provide the desired weight, right? And now let us move to the second one. Second is gravity type. It is backfill is there at the right side, and it is the gravity type. Gravity type. What is gravity type retaining wall? It depends entirely on their own weight to provide the necessary stability. The gravity retaining wall is shown in the point number in the C in the figure. This is called ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल. ग्रेविटी मतलब इसका सेल्फ वेट ही उसको रिटेन करने में सफिशियंट हो जाए. ठीक है. नाउ द अनदर वन सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल. ये क्या है? इट इज़ लाइटर देन ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल एंड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कैंटिलीवर एंड ग्रेविटी टाइप्स. दोनों के बीच की ये रिटेनिंग वॉल है. ये थोड़ी हल्की होती है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल से. और सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को बताया गया है, देखो आराम से देख लो. इसमें ग्रेविटी टाइप ही है बट इसमें रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाता है. तो ये सेमी ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल है. अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वन में. कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, काउंटरफोर्स रिटेनिंग वॉल is shown in that figure. Then other is buttress retaining wall are also shown in the previous figure. This is counterfort type retaining wall. See, toe heel is present. They will provide the reinforcement at the bottom, at the counterfort also, at the stem also. See, this is the figure of counterfort. Another one is buttress type retaining wall. See, this is the kind of buttress type retaining wall. Okay, so you can see here they can give this diagram and they ask which type retaining wall is this. They can give this exam and they can ask. They can give this exam and they can ask. Okay, so let us study what is counterfort. Counterfort means it looks like T or L-shaped cantilever wall and likewise uses the weight of the soil for stability. Okay, the counterfort supports the stem and heel slab of a retaining wall, right? और पांचवी जो है वो buttress retaining wall. It is like a covered counterfort type with ribs or walls. The toe and stem are a continuous slab as shown in the figure we have seen last. In order to calculate earth pressure on retaining walls, the following theories are used. रैंकाइन थ्योरी और कोलॉम थ्योरी, ये दो टाइप की थ्योरी है, हमें याद रखनी है. आपको मैंने रिटेनिंग वॉल बता दी, 5 टाइप की रिटेनिंग वॉल है. ठीक है. अब इन रिटेनिंग वॉल में जो अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वो दो थ्योरी से करते हैं. एक तो रैंकाइन की थ्योरी से, कोलॉम की थ्योरी से. जो रैंकाइन की थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स थ्योरी एंड अप्लाइड टू रिटेनिंग वॉल्स द फॉलोइंग एजम्पशन. उसमें अपन को क्या एजम्पशन लेके चलना पड़ता है? एजम्पशन मतलब मान लेना. पहला, द सोइल मॉस इज सेमी इन्फानाइट, होमोजीनियस, ड्राई एंड कोहेजनलेस. ये वन वर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. द सोइल मॉस इज सेमी इन्फानाइट होना चाहिए,
होमोजीनियस होना चाहिए, ड्राई एंड कोहेजन लेस होना चाहिए। कोहेजन लेस मीन्स आपस में जुड़ाव नहीं हो, जैसे सैंड है। दूसरा, द वेक ऑफ द रिटर्निंग वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ होनी चाहिए। और तीसरा है द रिटर्निंग वॉल इल्स अबाउट द सेम वो उस पर इल्ट करनी चाहिए। तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, 14.10 ए। जो फिगर दे रखा 14.10 में आप ए देखोगे ना, दिस इज काइंड ऑफ रिटर्निंग वॉल, और ये अर्थ प्रेशर का डायग्राम है। ओके, तो इसमें ये दिया है कि अकॉर्डिंग टू रैंकाइज की थ्योरी के मुताबिक, ये देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ अर्थ प्रेशर। H8 P force is acting at the H/3 from the base. PA is the pressure intent. ठीक है, अर्थ प्रेशर, दैट इज कॉल्ड PA, एक्टिव अर्थ प्रेशर। सो व्हाट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर? See, according to Rankine's theory, the intensity of active earth pressure PA trying to move the returning wall of height h away from the backfill. Backfill से returning wall को away करना चाह रहा है, वो कौन सा है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर। और वो कैसे कैलकुलेट करें? W is the unit weight, h is the depth of soil, and this is the constant that is called active earth pressure constant, 1 minus sin phi 1 plus sin phi. Okay, and phi is the angle of internal flexion or repose for the backfill. So through this formula is very very important formula. They can ask the formula, they can provide the value of phi, h and w. They can ask the pressure intention or the active earth pressure. Okay, now see, the total active earth pressure PA or resultant pressure per unit length of a returning wall कैसे कैलकुलेट करोगे? That will be the area of this triangle, the triangle distribution of pressure here. So you will take the area PA total, the active earth pressure will be W h square by 2 and Ka. Ka is 1 minus sin pi 1 plus sin pi, and where it will act h by 3 from the base of the footing. बेस से h by 3 पे ये एक्ट करेगा। अब अपन मूव करते हैं दूसरी पोजीशन पे। ये कह रहा कि इफ़ द सोइल इज ड्राई, अगर सोइल ड्राई है देन W इज ड्राई वेट ऑफ द सोइल हो जाएगा, और अगर मॉइस्ट है तो W मॉइस्ट वेट हो जाएगा। When the earth is surcharged and the surcharge is horizontal, then the intensity of lateral earth pressure PA due to the surcharge W1 same. You will calculate surcharge intensity is W1 1 minus I 1 plus sin pi. So total pressure intensity will be, you will add this surcharge here. Total will come. Okay. Now when the returning wall has a sloping backfill with surcharge angle alpha, then the intensity of lateral earth pressure PA at the base of the retaining wall of height h is given by, this is very very important. See, PA WH cos alpha. Okay, and then you will write cos alpha minus under root cos square alpha minus cos square phi upon cos alpha plus under root cos square alpha minus cos phi. They can ask this formula directly. Okay, this is what lateral earth pressure. The overturning moment due to active earth pressure at toe of the रिटर्निंग वॉल इज गिवन बाय, एट द टो पे कितना आउटर्निंग मोमेंट होगा वो अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, सी के विल बी द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट WH क्यूब बाई 6. इट विल कम WH क्यूब बाई 6. मोमेंट विल बी WH क्यूब बाई 6 Ka इज 1 minus sin 1 plus sin 5. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैल्यू दी जा सकती है और मोमेंट पूछा जा सकता है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ड्यू टू ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग ऑफ रिटर्निंग वॉल सेम। ओवरटर्निंग में कितना लोगे? 2 लोगे, और स्लाइडिंग में कितना लोगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5. ठीक है। और द प्रेशर अर्थ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द रिटर्निंग वॉल व्हेन इट हैज़ ए टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स द बैकफिल। ये पैसिव अर्थ प्रेशर हो गया। अब तक अपन ने एक्टिव प्रेशर पढ़ा, तो पैसिव का मतलब क्या हुआ? वॉल्स के जो अर्थफिल है, जो बैकफिल है, उसकी तरफ रिटर्निंग वॉल मूव कर रही, दैट इज कॉल्ड पैसिव। ओके, तो वो पैसिव था। एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट और हैं। द रिटर्निंग वॉल विथ हाइट्स एक्सीडिंग 6 मीटर आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ काउंटर फोर्स। काउंटर फोर्स रिटर्निंग वॉल हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? कंडीशन दे रही जिसकी हाइट ऑफ रिटर्निंग वॉल 6 मीटर से ज़्यादा होती है वहाँ पे। चौथा पॉइंट क्या है? द स्पेसिंग ऑफ द काउंटर फोर्ट इज 1/3 1/2 ऑफ इट साइड ऑफ द रिटर्निंग वॉल। सपोज करो हाइट h है, तो h/3 से h/2 के बीच जो है ना उसकी स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, h/3 से शुरू होनी चाहिए h/2 तक, और इट इज़ केप्ट बिटवीन 3 to 3.5 मीटर्स, 3 to 3.5 मीटर्स के आसपास इसको
रखा जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप इस चीज़ को भी पढ़ लेते हो तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मोमेंट पूछा जा सकता है, पीए पूछा जा सकता है, एक्टिव अर्थ लेटरल अर्थ प्रेस पूछा जा सकता है, प्रेशर इंटेंसिटी विथ सरचार्ज पूछा जा सकता है, केवल प्रेशर इंटेंसिटी वो पूछा जा सकता है, दिस इज टोटल प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। और प्रेशर इंटेंसिटी पूछी जा सकती है, प्रेशर इंटेंसिटी विल बी दिस एंड टोटल विल बी दिस, ओके, ठीक है, दिस इज द प्रेशर इंटेंसिटी PA, okay, and the total will be the area of this triangle, and what will be the pressure distribution here in shape of triangle. 0 will be here and maximum at the bottom, okay. So thank you so much guys, bye bye, take care.